The section 2, now we can easily interpret this is not subsection. This is clause 20. We have the Bare Act in our hand. See, this is section 2, जहां पर डेफिनेशंस हैं. कैसे जज किया कि ये क्लॉज 20 है? क्योंकि सबसेक्शन तो है ही नहीं. यहां से तो क्लॉज शुरू हो जाते हैं और ये क्लॉज चलते 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 टू क्लॉज 20 पर आते हैं और 20 में डिफाइंड है कंपनी की डेफिनेशन. तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ 1956, 1913 और पुरानी कोई भी कंपनीज एक्ट हो सकती है. व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ कंपनी? व्हेन अ ग्रुप ऑफ पर्संस try to earn money, try to earn their bread and butter. They come together, they join hands, they try to earn money. That is the Latin two words come plus panis. Together earning your bread and butter. Together earning. वहां से ये word निकला है come. So a group of persons earning their bread and butter together, having their bread and bread together. There's a company. So what is company? Lord Justice Lindley, that is basically the court order. This was a result of a dispute in England, and the Justice of England has defined the word company in a very exhaustive manner. That it is an association of persons, group of persons. They promise to contribute the money or assets to the common stock of the company, that is equity capital, that is a share capital, and employ it to have some legal business. You are making money out of it. You are sharing your profits and losses of the business. The common stock is referred to as the capital of the company. The persons who are bringing the capital are known as the members of the company. Normally, the members of the company. There are certain exceptions. We will talk about it later. The proportionate capital, that is the share of one person in the total capital, represents his share in the share capital. That is why company ki capital is known as share capital, because the capital is actually the pool of the shares of single shareholder. That is why the capital of the company is known as the share capital. And the shares are, of course, they are normally the transferable property, but they might contain some rights to transfer. That we will be when we will be talking about public company versus private company. This is the meaning of company. Now let us have a quick capture of the characteristics of company. What is a company? A company is, of course, a separate legal entity. What is a separate legal entity? That the members, the owners, and the company both have the separate legal existence. Unlike, say for example, partnership. Partners हैं जब तक partnership है, partners नहीं है, partnership नहीं है, the partnership is dissolved. Sole proprietor है, खुद है तो business है, खुद नहीं है तो business नहीं है. But this is not in the case of a company. Company is independent of its owners. Owners may come, owners may go. The company will be established through a legal procedure of incorporation. And until the time the company is wind up, by following the legal procedure of winding up, the company will be a separate legal entity. Now, what is a separate legal entity? It will create its own contractual capacity. It can hold the assets in its own name. It can be held liable in its own name, separate from its members, that is shareholders, separate from its directors, that is the managing committee of the company. This particular feature was well established in 1897 in the England court, Salomon versus Salomon. आप सब लोगों ने शायद इसके बारे में सुना. What was this whole case all about? That Mr. Salomon, together with his son, with his wife, his daughter, and 4 sons, whatever 6-7 people, they made up a company, and they issued with the assets of 30,000 pounds, if just to have a number. In the 30,000 assets, 20,000 shares and debentures were issued of, say for example, 1 rupee. In the debentures, there were secured debentures as well. There were unsecured debentures as well. So
Soon, interestingly, the secured debentures were subscribed by Mr. Salomon, the owner himself, and the unsecured debentures were issued to the public. Soon, the company went into liquidation. In the liquidation, the assets were fall short of to pay the liabilities. If you can see, the assets were 6,000. The liabilities were what? The debentures were 10,000 plus creditors 7,000. Total liabilities were 17,000. Now, in these 17,000, 10,000 debentures were actually taken up by Mr. Salomon, the main owner of the business. And there were 7,000 rupees other creditors who don't have any security. They were unsecured creditors. Now, when the 6,000 assets were liquidated, Mr. Salomon took away the entire 6,000 because, as a matter of law, the secured creditors are always given the preference over unsecured creditors. That is why they are known as secured. But the unsecured creditors dragged the matter to the court and said to the court that the secured debenture holder is nobody else than the owner himself. So why the owner can take the first money before paying us, the unsecured creditors? Because logically, the owners, the shareholders will get the payment after paying the unsecured creditors. And Mr. Solomon is also the owner of the company, and his 10,000 rupees should be paid after our 7,000 rupees are paid off. But interestingly, the court has denied the application of the creditors and said that Mr. Salomon, as a shareholder, is a separate person. Salomon and Company Limited is a separate legal entity, and the status of Mr. Salomon as a debenture holder is completely separate. Mr. Salomon as a shareholder is different. Mind my words. Mr. Salomon as a debenture holder is different in its legal capacity. And in the eyes of law, company is altogether a separate person. Don't mix Salomon and Company Limited with Mr. Salomon. They have nothing in common. And Salomon and Company Limited will pay the first payment of the assets to the secured debenture holder, no matter whosoever comes into the list. No matter the owner comes into the list, we don't care. The first payment will be to the secured debenture holder. If there is any surplus left, then the unsecured creditors will be paid. And then if any surplus is balanced off, then the preference shareholders, and then eventually the equity shareholders will be paid off. That's the thumb rule of the law. And by this particular case, the court in a very basic sense has applied to the concept of separate legal entity in the entire world. So this is a very important case. But interestingly, this case became a sensation across the globe. And it is a common parlance that this was the first case. No, this was not the first case. And England was not the first country to identify this particular fact. Rather, we Indians have identified this particular concept. Look into the second slide, Kandoli Company in 1886, way before 1897. And this was actually a Calcutta High Court decision that we have already established the fact that company is a separate legal entity. But this case didn't got that recognition into the British rule. And when the same concept was declared in 1987, this became a massive hit because England was that time the supreme power. But we Indians, we Calcutta High Court has already established the fact 11 years before the Supreme Court of England has discussed anything. We were way ahead at that time also. What we had faced that the Kandoli Company case had some dispute of excise and ad valorem duty, state taxes, you can say. Now, the taxes which the shareholders must face or must not face. I'm not going into the intricacies of the case. In that particular case,
The Calcutta High Court has defined that the company is a separate person. These are the wordings of Calcutta High Court in 1886. The company is a separate person, distinct from its member shareholders and the promoters, etc. This is a wording of Calcutta High Court in 1886. So, who was the first nation? India, who established the fact that company and its shareholders and its promoters, they have separate entity. But unfortunately, this court didn't get much recognition. And on the parallel lines, when in 1987, the England High Court, that is the Chief Court of England, has decided the case of Salomon, this became the massive hits. And even till today, in the company law textbooks of India, this case is defined in bold and italics. Nobody talks about the Kondoliti Company case. But you must go through this case and be proud of the fact that we Indians were way beyond the the England case. Now, another case of Lee and Lee Air Farming in 1961, they established another fact, another set of facts that in this particular case, Mr. Lee was the director. This was what? This was a company which was having the business of having the airplanes, that is the helicopters, above the agriculture land to spread the agriculture fertilizers from the top. So what we call it as aerial top fertilizers company. So Mr. Lee was the shareholder also. Mr. Lee was the director also of the company. He was the founding member also. And he was the employee also as a chief pilot. Now, one day, while flying the particular aircraft over the to spread the fertilizers on the agriculture land, farmland, he died. He crashed his plane, unfortunately, and he died. Now, in the company, Mrs. Lee, his widow, came and claimed that as an employee's wife, you must know there are employment laws. So if an employee dies in accident while performing his employment, his widow, his nominee, his legal heir can claim the workman compensation, if you have heard about it. So his widow also claimed that I must get the workman compensation because he was an employee of your company. But the other directors refused the contention on the fact that no, he was not an employee. He was the owner. He was a director. In what capacity you can ask an employee's compensation? And the matter went to the court. And the court once again decided the fact that this particular company is a separate person. Mr. Lee is a separate person as a shareholder. Mind my words. Mr. Lee is a separate person in the capacity of director. And Mr. Lee is a separate person in the capacity of employee, that is chief pilot. And this accident is a result of his employment. And you can't deny this particular employment on the fact that he was a shareholder or director or owner of the company. It has nothing to do with the ownership. He was an employee. Company is separate. His employment is a separate agreement. And his widow is entitled for the employees or workmen compensation. So these were the facts which established the separate legal entity concept in the company. Salomon case, Lee Farming case, and way back the Indian case decided by Calcutta High Court. So far, so good. Another characteristics includes, as we had discussed, that company is established under Companies Act. Company is formed and incorporated under this act. So of course, it is a separate person, but only into the eyes of law. It is an artificial person for the purpose of law. It is not a natural person, we are trying to say. It is actually recognized as a legal person to enter into a contract, to have a separate existence in the eyes of law, apart from its director and its shareholder. But it is not a natural person, of course. It has a valid contractual capacity because we are trying to establish it as a person in the law, in the court of law. What is the difference between a natural person and artificial person? See, don't give such examples that we can breathe, we can see, we can feel, we can touch. It is okay. In the eyes of law,
What is the difference between a natural person and an artificial person? What is the difference between me and my company in the eyes of law? This is not a difference that I can breathe, I can think, company can't think. That is बच्चों वाली बात है. What is the difference between a person and a artificial person is, see, when we are talking about law, we are talking about constitution. We are talking about some fundamental principle, fundamental rights, fundamental duties. We are talking about the Constitution of India. We are talking about the Citizenship Act. And so, for that matter, we are talking about so many constitutional rights and liabilities. So, as a constitution of India framework, as a citizen of India, as a natural person, I can get some of the rights. But the company can't get so. I'm talking about 2 and 3 together. Company can never be a citizen under the Constitution of India because it is not a natural person. Who is a citizen of India? First of all, he must be a natural person, male or female. Then, additionally, he need to or she need to comply to get a citizenship of a country. Right? So, under the Constitution of India, we have some fundamental rights which are only given to the natural persons, citizens. So we can't give all the fundamental rights to a artificial person. We had only created it as a separate artificial person to create its contractual capacity, distinct from its shareholder and directors. That's it. In the eyes of law, we need to create a distinct capacity. That is why we had treated it as a separate legal entity, as an artificial person, only in the eyes of law. It is created by law. It is not a natural birth. It can be abolished by law by diffusing the company, dissolving the company, winding up the company. It is only created as a person to hold the assets in its name, to have a contracts in its name, so that the shareholder can make a contract to become the owners, so that the directors can make a contract to become the directors. The creditors can make a creditors debt agreement with the company. So we need that name, that face in the eyes of law. And that face is actually the artificial person, because the company is established as a separate person. Now, I will be talking about this artificial person. We will be taking about some examples as well right now, okay, in a few minutes. Now, to jump further, we had already discussed it can be treated as a company can be treated as an artificial person, but it cannot be a citizen. That is for sure, because we can't give the constitutional rights, we can't give the Citizenship Act's rights to a company. These rights are reserved for the natural persons. Company's nationality and residence. See, company's nationality and residence is defined. When we talk about laws, when we talk about, say, for example, income tax. The income tax starts with residential status. अब company income कमाएगी तो income tax तो देना पड़ेगा. How the income tax will be applied? You must know in the income tax, the starting is residential status. So you need to identify whether the company is Indian, American, Australian. किस country के tax, किस country में जाके वो company tax देगी. So for that, we need the nationality of the company. We need the residential status very clear about the company. The company must be either resident or non-resident of India. Simple. So in various cases, it has been defined that the nationality should be specific. Normally, the country of incorporation defines its nationality, its residential status, only for the purpose of law. Only for filing GST, income tax, the residential status is defined. So far, we have touched the fact that it is an artificial person. It is not a citizen of any country. Company is not a citizen. But company has its residential status for the purpose of law, for the purpose of tax, especially. This is its residential status. Now, very important, the company has a limited liability. That is, all the members are liable to pay only the amount which the member has promised to the company. Say, for example, मैंने Reliance Industries में 1000 रुपए के शेयर खरीदे. Say, for example, मैंने 100 shares खरीदे 10 rupees के. My liability is only up to 1000 rupees. No matter Reliance के assets कितने 10,000 crore,
नो मैटर कल को उसकी लाइबिलिटीज हो जाती है 15,000 करोड़, मेरा लाइबिलिटी सिर्फ 1,000 रुपए का है एज अ मेंबर, एज अ शेयर होल्डर. So this is the concept of liability, which is limited of which is in its limited nature. So every member in the company has its liability only to the capital promised by him and not paid by him till date. Say for example, मैंने 1,000 रुपए के शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीदे 10 रुपए वाले, टोटल लाइबिलिटीज 1,000. अब मैंने उसमें से 900 रुपए दे रखे हैं, 800 रुपए दे रखे हैं, बाकी 200 रुपए की कॉल मनी बाकी है. तो लाइबिलिटी अब आपकी कंपनी चाहे करोड़ों के लॉसेस में चली जाए, आई डोंट केयर, मैं आपको एडिशनली 200 रुपीज ही दूंगा. उसके अलावा आप मेरे से एज अ मेंबर कुछ भी कॉल नहीं कर सकते. वी even as a whole are not the owners of the undertaking. We are not liable to pay your debts. You are different, we are different. There is only an agreement that I will be the owner of the company only to the amount which I had promised. And if I am the owner of your limited company, I will only bear that particular amount in your liabilities, not for the entire liabilities. Unlike partnership. Now, if say for example, we both are partners, we are having a partnership firm. Now, if the company's assets are not so much, but the liabilities increases, now if the assets of the partnership firm are insufficient to pay the liabilities, the personal liabilities of the partners will be at stake. आपको अपने घर से बर्तन बेच के भी क्रेडिटर का पैसा चुकाना पड़ेगा, नहीं तो आपको वो छोड़ेंगे नहीं. But this is not the case in case of LLP. This is not the case in case of a company because we are talking about limited liability. से ज्यादा नुकसान हो गया तो the liabilities, the creditors will have to suffer. जैसे अभी हमने सैलमन के केस में देखा कि अगर assets थे, the only assets were 6,000, the entire 6,000 went to share the Salomon as a debenture holder. All the secured creditors suffered a loss of 7,000. Not a single penny was paid out of the pocket of Mr. Salomon because the company had a limited liability. But there are certain exceptions. If you are having some false representation, ये हम आगे discuss करेंगे lifting of corporate wheel में. If the company is created with some fraudulent manner, in a fraudulent manner, if the purpose is fraudulent, if you have actually registered your company as an unlimited company, we will be talking about unlimited company in the types of company. If you raise the funds from the public by way of prospectus and your prospectus was misleading, आपने झूठ बोल के, गलत सलत बोल के पैसा रेस किया है, तो इस केस में अब आपकी हम लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं मानेंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मानेंगे. नाउ व्हाट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी? दैट इफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर इनसफिशिएंट, यू गो टू योर होम, सेल योर पर्सनल एसेट्स एंड पे योर क्रेडिटर्स. वी डोंट केयर. So unlimited liability का मतलब होता है the personal assets will also be at stake if the assets of the companies are not sufficient to pay the liabilities. And if you had raised the loans and borrowings, if you have accepted the defaults and you have cheated with them, there was a fraudulent purpose. If investigation of SFOI, any investigating authority, was set upon you, income tax वालों की जांच बैठ गई, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस दैट इज एसएफआईओ की जांच बैठ गई और उन अथॉरिटी सेबी ने जांच बिठा दी और हमें पता लगा कि आप तो सारे ही फ्रॉड करने में लगे हुए हैं, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सर हमारी तो लाइबिलिटी लिमिटेड है. यू ऑल हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स ऑल योर क्रेडिटर्स. सो very important, we were talking about limited liability, we had easily gone through, we will be talking about lifting of corporate wheel, but very important. And this particular section, I play with this particular section because this has some very interesting interpretations. Now, what we talked about in section 3, this was section 3 by the way, that the companies has limited liability, the members of the liability is limited, fine, but there was an exception, there is an exception. First of all, यहीं से ही कहानी शुरू हो जाती है. Rather, if we talk about the Bear Act, चलो leave Bear Act, हम यहीं से देख लेते हैं. What it is? Section 3, subsection A, clause A, subclause A, ऐसे ही लिखा हुआ है लॉ मेकर ने 3A. So this is section 3A. ये क्या है? Section 3, subsection 2, clause
सी, ये क्या है? सेक्शन 3A, डोंट मेक इट ए एज सबसेक्शन ए, अपनी मर्जी से सबसेक्शन न लगा देना। दिस इज सेक्शन 3A, दिस ए इज अटैच्ड विथ 3। नॉर्मली जब आप इस तरह के सेक्शन पढ़ते हैं, देखो जब इनिशियली लॉ बना होगा तो सेक्शन तो 1 2 3 4 ही बने होंगे। ये जो 3A 4B आ जाता है बाद में, इसका मतलब ये अमेंडमेंट एक्ट से एक नया सेक्शन डाला गया है। दिस इज जस्ट टू गिव एन आइडिया, राइट? नाउ सेक्शन 3A डिफाइंस कि वैसे तो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बट members are severally liable in some cases. That means we are talking about unlimited liability. We are talking about unlimited liability. We are continuing the exceptions. कि the members will be severally, individually liable for the debts of the company. अब ये एक एक्सेप्शनल केस है, समझे? इफ एट एनी टाइम, एंड दिस हैज समथिंग वेरी गुड टू हैव समथिंग इन इंटरप्रिटेशन. Now just look into the line. I'm taking this line. If at any time, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, I hope you know that, कि एक 1 person कंपनी होती है जो हम डिस्कस करेंगे, एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है. मेजरली 3 पार्ट्स. एक 1 person कंपनी कैन बी एस्टैब्लिश्ड विद अ सिंगल 1 shareholder. In a private company, there must be minimum 2 shareholders, members, and in case of a public company, minimum 7 shareholders must be there to incorporate a company. शायद कुछ लोगों को ये बात पता भी होगी. 1 member, 2 members, 7 members. ना उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 3 ये कहता है, इफ एट एनी टाइम, ऑफ कोर्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, द नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिड्यूस्ड. अगर आपकी एक पब्लिक कंपनी है, हमने आपको बोला था 7 मेंबर रखना, आपने 7 से कम कर लिए. या फिर अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है, हमने आपको बोला था मिनिमम 2 मेंबर्स रखना, 2 से कम कर लिए. अच्छा, 1 person कंपनी के लिए कुछ नहीं लिखा है. अरे 1 person में तो 1 ही रहेगा, और जब उसकी डेथ हो जाएगी तो एक नॉमिनी होता है, वो 1 person बन जाएगा. नॉमिनी रखना मैंडेटरी है. तो इस केस में ओपीसी को लाने की कोई जरूरत नहीं है. जितना लॉ मेकर ने बोला है उतना ही पढ़ेंगे. पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी में अगर 7 या 2 से कम हो जाते हैं, से फॉर एग्जांपल आज हमारे पब्लिक कंपनी में 6 ही लोग रह गए, एक की डेथ हो गई, शेयर ट्रांसफर करके चला गया, कुछ भी हुआ, या हमारी एक प्राइवेट कंपनी थी, 2 जने थे, एक ने शेयर, अपने सारे शेयर दूसरे को ट्रांसफर कर दिए, अब एक ही शेयर होल्डर रह गया है. तो ऐसे केस में आपको लॉजिकली क्या कर लेना चाहिए? अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर्स बढ़ा लेने चाहिए, और अगर आप एक पब्लिक कंपनी है तो अपने 7 मेंबर्स बढ़ा लेने चाहिए लॉजिकली. कब तक बढ़ा लेने चाहिए वो डिफाइंड है सेक्शन 3A में. अगर आपने अपनी कंपनी का बिजनेस अगले 6 महीनों तक चालू रखा, मतलब 6 महीने की लिबर्टी है मेरे पास, कि अगर मेरी पब्लिक कंपनी है और मान लेते हैं एक जने की डेथ हो गई, अब पब्लिक कंपनी में रह गए जो ने 6, अब ये 6 से 7 मेरे को कब तक कर लेने चाहिए? अगले 6 महीने तक. अगर नहीं किए तो एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, ये जो कम लोग लेकर बैठे हैं आप, 5 जने, 6 जने, 4 जने, ड्यूरिंग द टाइम दैट इट सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दो 6 months. फर्स्ट पॉइंट. अब 6 महीने के बाद जो जो लोग हैं, ये भी बड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसके ऊपर कोर्ट में केस हो जाते हैं. देखते हैं कैसे. आफ्टर दो 6 months and are cognizant, that is aware of the fact कि हमारी कंपनी में मिनिमम लोग 7 या 2 लोगों से कम हो चुके हैं. अब यहीं पे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है. पहली बात तो ये कि मान लेते हैं हम 7 जने थे, एक जने की डेथ हो गई, अब हम रह गए 6 जने. अब अगले 6 महीनों में जो लोग कंटिन्यू करके करते करते 6 महीने के बाद भी कंटिन्यू कर रहे हैं, पहली बात तो बात सिर्फ उनकी हो रही है. ऐसा भी हो सकता है कि इन 6 महीनों में आप भी छोड़ गए, 5 जने ही रह गए, एक और छोड़ गया, 4 जने रह गए, एक और छोड़ गया, 3 ही रह गए. हम उनकी बात नहीं कर रहे, जो गए सो गए. इन 6 महीनों में जो जो जाता जाएगा वो गया, उसको छोड़ दो आप. इन 6 महीनों में हम किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं, राइट? अच्छा, जने तो आपके कम हो ही गए, 7 से 6 हो गए, अब 6 महीने हैं, हम आपको चेक कर रहे हैं. इन 6 महीनों में भी जो जाता जाए चला जाए, हम उसको कुछ नहीं कह रहे, और उसके ऊपर हम कोई लाइबिलिटी भी नहीं लगाएंगे, जाए भले. नाउ अब जो लोग फाइनली बच गए 6 महीने बाद, एंड उसमें से भी वो लोग जिन्हें ये बात पता थी
कि हमारे लोग 7 या 2 से कम हो गए हैं, मतलब उन लोगों को भी एग्जेम्प्ट कर दिया जो इन 6 महीनों में आपको छोड़ के जाते गए, वो भी एग्जेम्प्टेड है। उन लोगों को भी हमने एग्जेम्प्ट कर दिया जो छोड़ के नहीं गए हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि मेंबर्स 7 या 2 से कम हो गए हैं, वो भी एग्जेम्प्ट है। इनको छोड़ दो आप। उनके अलावा जो बच गए, शैल बी सेवरली मतलब इंडिविजुअली लायबल फॉर द पेमेंट। नाउ एक वर्ड होता है जॉइंटली लायबल और एक वर्ड होता है सेवरली लायबल। यहां पे सारा खेल है, अभी बता रहे। दे विल बी सेवरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ होल ऑफ द डेट्स ऑफ द कंपनी, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। विच टाइम? बात ये आती है इंटरप्रिटेशन की, विच टाइम की बात हो रही है। एंड मे बी सेवरली स्यूड देयरफॉर। आगे वाली लाइन तो छोड़ ही देते हैं। अब ये जो दैट टाइम है, ये दैट टाइम क्या है? कौन से टाइम की बात हो रही है? जिस दिन मेंबर 7 या 2 से कम हुए वो टाइम, उसके अगले दिन से, या फिर उसके 6 महीने बाद के टाइम से जो शुरू होता है? ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए आपकी कंपनी में मेंबर थे 7, 31 मार्च को एक जना मर गया, ठीक है। अब 1 अप्रैल को स्टेटस क्या है कि अब आपकी कंपनी में 6 लोग रह गए, मेंबर 7 से कम हो गए। अब 1 अप्रैल से 6 महीने तक हम आपको कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, एक जना जोड़ लो और जो चल रहा है चलने दो। आपने नहीं जोड़ा। 1 अप्रैल से 6 महीने कितने हो गए? 30 सितंबर। फाइन। 30 सितंबर तक अब आपने किसी को जोड़ा ही नहीं है, अभी भी मेंबर रह गए 6। अब आ गई 1 अक्टूबर। अब 1 अक्टूबर को ये जो 6 लोग रह गए हैं, इन 6 लोगों की, अच्छा मान लेते हैं इन 6 महीनों में इस 6 में से भी 2 लोग और छोड़ गए, तो पहली बात तो जो छोड़ गए सो छोड़ गए, वो फ्री है इस कंपनी से, उनको हम लायबल नहीं करेंगे। अब बच गए और 4 लोग। 1 अक्टूबर को 6 महीने गुजर गए और मेंबर को छोड़ भी गए, उनको फ्री कर दो। अब आपके 4 जो लोग बचे हैं, अब आपने इन 6 महीनों में जिन जिन से कॉन्ट्रैक्ट किया है, या इवन जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं मान लेते हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कौन कितना लायबल होगा? ना, क्या उन 6 महीनों के लिए ये जो 4-5 लोग बच गए वो सेवरली लायबल मतलब क्या अनलिमिटेडली लायबल होंगे? यस और नो? देखो 2 क्वेश्चन। उन 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए क्या वो 4-5 लोग लायबल होंगे? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, उन 6 महीनों के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे क्या उनके लिए वो 4-5 लोग लायबल होंगे? पहले हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, वो इजी है। कि अब मान लो 6 महीने निकल गए, अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं क्या उनके लिए आप सब जने पर्सनली लायबल होंगे? यस और नो? टू ए। और आपने नहीं बढ़ाए मेंबर, तो उन 6 महीनों के लिए क्या आप जो मेंबर्स बिलो 7 हो चुके हैं आप पर्सनली लायबल होंगे? यस और नो? पूरा पैराग्राफ आपके सामने। चीटिंग कर लो जितनी कर सकते हो, दिमाग चलाओ। 1 मिनट का टाइम लेते हैं। ये मैंने यहां पर बोला है इंटरप्रिटेशन प्लेज इट्स रोल। सी, एक वर्ड अंडरलाइन किया मोर देन 6 मंथ्स, और एक वर्ड मैंने यहां पे बोल्ड किया है कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। अब द लॉ मेकर इज वेरी क्लियर अबाउट इट एंड ही इज प्लेइंग बिटवीन द लाइन्स दैट this particular word during that time will continue and relate with this particular word more than 6 months. Now, ये जो मेंबर्स बिलो 7 भी हुए हैं, ये अगले 6 महीने के अंदर किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पर्सनली लायबल नहीं होंगे। और अब अगर 6 महीने बाद भी आप नहीं सुधर पा रहे हैं, अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर होंगे उनके लिए आप पर्सनली लायबल होंगे फॉर दोज कॉन्ट्रैक्ट। नाउ दिस इज ड्यूरिंग दैट टाइम इज एक्चुअली रिलेटेड विद द वर्ड मोर देन 6 मंथ्स। मोर देन 6 मंथ्स के बाद वालों के लिए आप पर्सनली लायबल हैं, यानी कि इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स यू आर फ्री, यू आर हैविंग योर लिमिटेड लायबिलिटी, you increase the number of shareholders
एंड इवन इफ नॉट सो यू विल बी हेल्ड लिमिटेडली लायबल। 6 महीने तो आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपकी गलती यह है कि 6 महीने बाद भी आपको मिनिमम मेंबर्स पूरे करने में दिक्कत हो रही है। इस चीज से हमें प्रॉब्लम है। एंड आफ्टर दो 6 मंथ्स ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आप पर्सनली लायबल होंगे। माइंड माय वर्ड्स। यानी कि आपकी ना पर्सनली लायबल होंगे का मतलब क्या हुआ? पर्सनली लायबल का मतलब यही तो है कि आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म की जाएगी और जिसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कर दिया जाएगा। दिस इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इज इट क्लियर? So during that time shall be related with more than 6 months. अच्छा, सेकंड लेवल इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये जो वर्ड है सेवरली लायबल, इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं 7 जने थे, अब आप 6 ही रह गए, एक जना कम हो गया और मोर देन 6 मंथ्स हो गए। अब तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स करोगे उसके लिए लायबल हो पर्सनली, और पर्सनली में भी कैसा? सेवरली, मतलब आप 6 जने और मैं आपका क्रिएटर हूं, ठीक है? मेरा 1 लाख रुपया ड्यू है आप लोगों से। अब मोर देन 6 मंथ्स हो चुके हैं, यू ऑल 6 आर लायबल, पर्सनली लायबल। नाउ अब मैं आप 6 के 6 लोगों से जो क्लेम मांगता हूं, क्या वो मैं इक्वली मांगूंगा? या फिर मान लो मैंने किसी भी आप 6 में से किसी एक को पकड़ लिया कि मुझे पूरा 1 लाख रुपया दीजिए, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं पूरा 1 लाख क्यों दूं? हम 6 जने हैं, तो ये 1 लाख 6 जनों में बांट के में से तो प्रपोर्शनेटली लो। कैन यू say this to your creditor? Yeah, the creditor is actually entitled to claim the entire 1 lakh rupee from any single shareholder. Member or a creditor can ask the entire money from any single member. The answer is I, as a creditor, has nothing to do with your proportions. You all are severally liable, individual liable. मैं पूरा 1 लाख रुपया किसी भी एक को पकड़ के उससे मांगूंगा और आपको देना पड़ेगा, बिकॉज यू आर सेवरली लायबल। अब सर हमारा प्रपोर्शनेट तो 20-20 हजार होता है, हम 5 ही रह गए। हाँ, तो आप आपस में लड़ो। मैंने किसी भी एक मेंबर को पकड़ के उससे पूरा क्लेम मांग लिया, आपको पूरा क्लेम देना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंटली लायबल एंड सेवरली लायबल। अगर यहां वर्ड यूज किया होता जॉइंटली लायबल, तो आप कहते हैं कि सर हम तो 5 ही जने रह गए हैं, आपका क्लेम है 1 लाख, हम सब जने 20-20 हजार रुपए देंगे और आप मेरे को 20 हजार से ज्यादा कंपेल नहीं कर सकते। अगर वर्ड क्या होता? जॉइंटली लायबल। अब वर्ड क्या है? सेवरली और इंडिविजुअली लायबल। मैं किसी से भी अपना पूरा डेट क्लेम कर सकता हूं एंड आपको मेरे को पूरा क्लेम चुकाना पड़ेगा। अब आप आपस में एडजस्टमेंट करते रहना। मुझे मेरा 1 लाख मिस्टर ए से चाहिए, मिस्टर ए मेरे को देगा। अब वो बाकी चारों से अपना 20-20 हजार 30-30 हजार लेता रहे, वो आपका इंटरनल मैटर है। आई डोंट केयर एज अ क्रेडिटर। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेवरली लायबल। Is this clear? What is the difference between jointly liable and severally liable? To conclude the slides of features of the company, features is the company is a separate person. It has a perpetual succession, means a never ending succession, means सारे डायरेक्टर्स एक बारी में डेथ हो जाती है। एक केस भी है ऐसा कि मान लीजिए एक कंपनी थी जिसमें सारे डायरेक्टर्स और सारे शेयर होल्डर्स एक मीटिंग में बैठे थे, 2, 5, 7, 10 जो भी, एक अर्थक्वेक आया, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जो भी हुआ, सारे डायरेक्टर्स और सारे शेयर होल्डर्स की डेथ हो गई। नाउ द कंपनी डोंट हैव एनी सिंगल डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। विल द कंपनी सीज टू ऑपरेट? Will the company no longer exist? The answer is no. The company will remain in existence. The company has a perpetual succession का मतलब a continuous life of the company. कंपनी आई भी कैसे है? विद द लीगल प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी जाएगी भी कैसे? विद द लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। Until the company is not wound up, the company will operate as a company. शेयर होल्डर्स मर गए, दूसरे शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, डायरेक्टर्स मर गए, दूसरे डायरेक्टर्स आ जाएंगे, और कोई कुछ करने वाला नहीं है। द लॉ, द कोर्ट विल डिसाइड एंड दे विल रन द कंपनी। और कुछ नहीं हो सकता। द कोर्ट विल पास एन ऑर्डर टू वाइंड अप द कंपनी। जब तक ऐसा कुछ नहीं होता, द कंपनी विल रिमेन अ सेपरेट लीगल एंटिटी। Next is the shares transfer. Of course, the shares are movable property.
transferable property. It can be transferred from one person to another. Of course, there are certain restrictions in the case of private limited company. Now, it can sue in its own name because it is a legal person. It can be sued by its on its own name from the third party. You can sue in your name to any third party. You have separate contractual rights and obligations. You have a limitation of action, means the company's powers are defined, what it can do, what it can't do in the memorandum. So the memorandum and articles will define the powers and duties of the company. We have a separate management, which is known as a board of directors. We have a separate ownership, who are known as the shareholder. Company अलग है, shareholder अलग है, management अलग है. Management को normally हम यहाँ पर बोल रहे हैं board of directors. Termination of existence, as we have discussed, कि इसकी एक perpetual succession है. इसकी existence तभी terminate होगी जब आप एक proper wind up का procedure follow करेंगे. Until unless the wind up procedure is not followed, the company will continue to remain a legal personality.